यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफी बार शुभकामनाएं देती हूँ, अच्छी बात है। जब तक नवरात्रा तब तक शुभकामनाएं देते रहो और कमेंट बॉक्स में मुझे भी शुभकामनाएं देते रहो। तो आज विजयदशमी है, तो काफी साल हो गया रावण वध देखे हुए। चलिए हम भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं।
स्टेडियम में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस प्रभु राम और लक्ष्मण का रथ का आगमन होने वाला है, जिसका प्रवेश द्वार का जो फीता है वो यहाँ की डीएम साहिबा उदिता गोस्वामी और एसपी कप्तान गौरव मंगला जी के द्वारा किया जाएगा।
रावण और कुंभकर्ण का यहाँ पे पुतला का दहन हो गया। जैसा कि कहा जाता है ना, हर बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, कुछ उसी तरह से ये भी हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भैया यहाँ के सदस्य हैं, चक्रवर्ती सम्राट के, है ना भैया? राजेश कुमार चक्रवर्ती की तरफ से ही हो रहा है इसका आयोजन, है ना? जी हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद भैया, बहुत कोऑपरेट किए, बहुत अच्छे माइडियर टाइप के हैं। तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो रावण और कुंभकर्ण का यहाँ पे पुतला का दहन हो गया। जैसा कि कहा जाता है ना, हर बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, कुछ उसी तरह से ये भी हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भैया यहाँ के सदस्य हैं, चक्रवर्ती सम्राट के, है ना भैया? राजेश कुमार चक्रवर्ती की तरफ से ही हो रहा है इसका आयोजन, है ना? जी हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद भैया, बहुत कोऑपरेट किए, बहुत अच्छे माइडियर टाइप के हैं। तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।